Good evening everyone. Today we are again starting with React.js day 6. Today we are going to understand think in React. Like React कैसे सोचता है और हमें React में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है ताकि हम एक React का एक बेस्ट एप्लीकेशन हम बना सकें. So let's start with React in thinking from React documentation. React can change how you think about the design you look at and apps you build. Okay, React can change how you think about the design you look at the app. What, how was your mindset to making a design? That mindset will change after this documentation. When you build a user interface with React, you will first break it apart into pieces called components. We are not making a full-fledged website in a single crack. We are going to making some component and making and building some amazing things. हम डायरेक्टली नहीं बना रहे होते, हमें उन चीज़ों को कंपोनेंट के बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए. लाइक ये मेरा एक नेविगेशन कंपोनेंट बन जाएगा, यहाँ ऊपर टॉप नेविगेशन हेडर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ये फुटर्स. लाइक अगर यहाँ पे फुटर्स दिया है, या दिस इज आवर फुटर. ओके, ये सारे हमारे पास कंपोनेंट्स है. वी आर वर्किंग ऑन द कंपोनेंट्स, नॉट ओनली ऑन द सिंगल navigation, single HTML page. Then you will describe the different visual states, like जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने कैसे टिक टैक टो गेम बनाया था. लाइक हमने कितने सारे स्टेट्स मैनेजमेंट किए थे, उसमें हिस्ट्री के लिए किया था, देन हमने वहां पर किस यूजर्स की चांसेस के लिए किया हुआ था, देन करंट मूव के लिए किया हुआ था. बहुत सारे हमने वहां पे स्टेट्स बनाए हुए थे फॉर ईच ऑफ योर कंपोनेंट. हर कंपोनेंट के लिए हमने स्टेट्स बनाया था. लाइक हमने एक हिस्ट्री का अलग से हमारा स्टेट था, पूरा हमारा फुल फ्लैज स्टेट हमारे लिए उसके लिए भी था, लाइक बोर्ड के लिए, और हर एक स्क्वायर्स के लिए भी हमारे पास स्टेट्स थे. लाइक वी डिड वेरी वेल लास्ट लेक्चर. फाइनली यू विल कनेक्ट योर कंपोनेंट थ्रू so that the data flows through them in. ओके, ताकि हमारा जो डेटा है वो अच्छे से उसमें फ्लो कर सके. ऑलराइट, बेसिकली डेटा फ्लो मैटर्स अ लॉट. लाइक हमारा कैसे डेटा फ्लो कर रहा है, हम कहाँ से किसको कनेक्ट करेंगे, कौन सा स्टेट यूज करेंगे, ऑल दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट. वी विल गाइड यू थ्रू द thought process of building searchable product data table with React. ओके, डेटा प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं जिसमें हम सर्चेबल प्रोडक्ट, ये हमारे प्रोडक्ट्स की डेटा है, जेसन फाइल है हमारे पास, जेसन डेटा है, इसको हम सर्च करेंगे. ऑलराइट, स्टार्ट विथ मॉकअप. Imagine that you already have JSON API and mockup for designer. The JSON API returns some data that look like this. This is all our my data, or called. Okay, and this is our my mockup. Like there should be a search option, and so only show product in stock, name, prices, fruits. There is a fruits like apple, dragon fruit, and passion fruit, and the prices of it's all $1, $1 and $2. And vegetables like spinach for $2, pumpkin for $4, peas for $1. All these data are coming from here. Like there is a category fruit, and price is $1, stocked, and true stocked true. Name of the fruit is apple. All right, this is all our things. Like, and the second one is a price for fruit, and then price is $1, stock true, and name is dragon fruit. Okay, category, price, stock, and name. These four data are coming from where our array of API. Okay, to implement the UI in React, you will usually follow the same 5 steps. Like, first step is to break the UI into component hierarchy. What are the first step?
break the UI into component hierarchy. Break like we are going to follow some steps. What are the steps for that? Step 1 is step 1, break the UI into component hierarchy. Then we are focusing on second step will be the build a static version of React. Okay. Second step is build a static version in React. Okay. Then we have then we follow the next steps to find the minimal but complex representation of UI state. Then we focusing on the making the state management basically. All right. Then we focus on where. Then the fourth steps to identify where your states should be live. Okay, where our states should be live. Okay, then we'll focus on add inverse data flow. That's like जैसे हमने लास्ट में क्या किया था जब हमारा कोर कंपोनेंट हमने जब बना लिया था अपने टू डू लिस्ट का. देन वी फोकस्ड ऑन इनवर्स डेटा फ्लो कि हमने उस डेटा फ्लो से कहाँ पर आए थे, हमने कैसे हिस्ट्री बनाई थी, वो तुम्हें तो याद होगा इस एंड दैट्स वाज द कोर पार्ट. इनवर्स डेटा फ्लो भी हमने किया हुआ था लास्ट वाले में ही. ओके, दिस ऑल these 5 steps, necessary 5 steps for building any React application. Okay, these 5 steps, focus on these 5 steps. Okay, this all 5 steps to building any React application. All right, first we focused on break the UI into component. Like what are the UI we have, we are going to breaking it out. Like what are the UIs? Like we basically focus on making like this kind of UI. Okay, like this is our UI. This is our UI.
Okay, we are going to breaking this UI into components, like multiple components. What kind of component we are generally focused on? First will be the search. We're focusing on making a component like search, then item name, items, list. Okay, then we focused on the prices and quantity. Price, quantity, then stock, then this price and stock. This all are the four component basically we are going to focusing here. Then build a state or various React component, like state for every, like we are going to building multiple states for all. Okay, multiple states we are going to make state for this. Then we're making a state for this also, and not for this. Okay, then find the minimal but complete representation of UI state. Complete representation of UI state. Then we focus on identify where state would be live. Okay, like where your state would be live. Then we add a inverse data flow. Okay, then inverse data flow and at all. This all are the architecture to making a simple React application. Okay, this is the architecture to making a simple React application where we're focusing on multiple things at a single time. And this all are built inside a single page. This all are the things that's building inside a single page, not focus, not outside the single page. It's all are building in a single page. Single page application using React.js. This is the thing. Basically, we are going to build single page application. We're going to build using the React.js. So this all topics we are going to learn by today and focusing to making something multi-dimensional or making something better for ourselves. Okay, let's start with every chunks of data. Okay, start with mockup. This all are the mockup for, and this is the UI. The first step to break your UI in
component hierarchy. Start by drawing boxes around every component and subcomponent in the mockup and name them. If you work with a designer, then they may have already named this component in their design tool. Ask them. Depending on your background, you can think about the splitting a design into components in different ways. First is the programming. Use the same technique for deciding if you should create a new function or object. One such technique is a single responsibility principle. What is it? A single responsibility principle. A single responsibility principle is a computer programming principle that states that a module should be responsible to one module, and module should be responsible to one and only one actor. Okay, then actor refers to a group containing one or more stakeholders to use their to require to stage. Okay, yeah. That is the component should ideally only do one thing. If it ends up growing, it should be decomposed into smaller subcomponents. Okay, we have components. Every component has multiple things. Like we are having a main page of component. This main page having multiple components. Like, let me show you from here. Like, this is our main component. Okay, this component having multiple components. This is our main component. Okay, then we have one component is search. Search is our component. Search is our component. Okay, after the search we have one component is only show product in stock. One second component is this. Okay, and the third component is this one, all the data. In this data I have one component is heading, main heading component. Then we have another component for fruits and another component for vegetable. Okay, then we have one component is heading. I have another component of list of data like their name and their prices, and every one component has price, name and the price, every list items. These all are component. Then we have another component for prices and only for the names. Okay, the same things here, like vegetable is our one component, then all the vegetables in a single group of table, then all the one single component of like pumpkin. Okay, every component has their sub components. This all are the thing. Okay, we have so many components in single small application. Like,
like this: 1, 2, 3, 4, 5, then we have 6, 7, 8, 9, then 10. Okay, we have 10 components here. We all have how many components? We have 10 components. We have 10 components. Okay, 10 components. We have 10 components to building these things. Like we have search box, and one component is for stock, showing the stock. Only show product in the stock, like what are the things in black color, this all are the in stock, and the product that is in red color, it is out of the stock. And this all are the things we are going to use in the state. We are how we focusing on this component management with the help of the state management also, and for the product, and like for fruits and the vegetables, all the things. Okay, this is interesting application to building the amazing. Okay, CSS consider would you make class actor, however components are a bit less granular. Design consider you okay, organize the design layer. Okay, if okay, if your JSON is well structured, you will often find that naturally map the component structure of your UI. That's because UI and the data model often have the same information architecture, that is the same space, uh, same shape. Separate your UI into components where you where each component match one piece of your data model. There are 5 components in this screen. Like we have decided to build 10 components, but there is a 5 components. Let's see. First is the which filterable product. Like first one is first component is filterable products. First one is like first one is filterable product. Then is a search bar. Okay. Then is a product table. Then we have product category row, then product row. Okay, we have multiple components in a product row. We have multiple components in a single row, and for the fruit product category row, this all are the same, having multiple components are there. Small components. Okay, and we have searchable bar, search through the name, and search by the some options. Okay, basically what are the major component we have? We have one here major component, then two is our major component. In this component we have two more components, two more. This we don't have, we consider it as a single component. Then we have second component. In this component we have multiple sub components like there. Okay, like this and that. Hope we understand the component hierarchy architecture. Let me take a sip of water.
Gray contain the entire app. Search bar blue receives the user input. Product table lavender display the filter and the list according to that, and product category row for green display heading for the each category. Product row yellow display the row for each product. Okay, if you look at product table lavender, you will see the table header containing the name and price labels isn't its own component. This is matter of preference and you could go either way. For this example, it is a part of product table because it appears inside the product tables list. However, if you ran header grows to be complex. If you are sorting, you can move you can move into its own product table header components. Now you have identified the component in mockup, arranging them into hierarchy components that appears within another components is the mockup should appears a child in a hierarchy like this. What is this? Let me show you here. For this, we have filter product table. In this filter product table, I have search bar and the product table, then product category and the product row. How it's looking like here. We have search bar, for the search product. This is a full component, big one. Then we have search bar and the product table. Then we have search bar. Then we have product table. This is our full product table. Inside the product table, we have product category and the product rows. Product category and the product rows. Hope you understand this component based hierarchy, how we are working with it. So let's start with the making the component using HTML CSS. Okay. Now we have just break the UI into components, like how many components we have, and okay. Now it's time to now that you have your component hierarchy, it's time to implement your app. This the most straightforward approach is to build a version that's
that renders the UI from your data model without adding an interaction yet. It's often easier to build a static version first and add interactivity later. Okay, first it is more better, like first we making our static component, all the data filling are going to be from our side. That's okay. Build a static version later a lot for typing and no thinking, but adding interactivity requires a lot of thinking and not of typing. Okay, to build a static version of your app that render your data model, you will build components that reuse other component and pass data props. Props are a way to passing data from child to parents. From child to parents. A way to passing data from child to parent. If you are familiar with the concept of state, don't use state at all to build a static version. Yes, state is reserved only for interactivity, that is data is changing over time. Since the static version of app, you don't need it. Alright. You can either build top down by starting with building the components higher up in hierarchy, like filterable product table, or bottom up by working with components lower down, like product rows in a similar example. It usually easier to go top to down and on large project it's easier to go from bottom to up. For the last project, we are going from bottom to up. In the last lecture, like we did on tic-tac-toe game, that we build from bottom to up approach. Like we build the buttons, then we build the other search options, all the other history management on other way, in another way. Okay, this is the quick start for our project. This is our quick start for our application. Let's build this and we are working further more. To building this, first we have to go to our file, change it to programming 2024, change directory to React, change directory to React.js. Okay, then we check and we focus on which. Okay, now I have to build our application here, so we call it bun create React. Our project name will be the day 06 underscore, and what the product is filter data. Filter data. Okay, now I'm going with React.js and I'm going to use JavaScript, and that's it. Change directory to this, then burn install. After installing this, we are going to burn install, then run our application.
Wait for few seconds. Now I have to run the error application, run dev. Before running this application, we have multiple files. We're going to code this. After that, to use like run dev. This will be running on localhost 5173. Copy this, open the Chrome browser for okay. This is our template for our application. So we have our application here. Now going to open app.jsx, and I'm not going to use anything. I don't have use of this. Working with this, not working with this, and use state. We are not also working with this. We just want this. Even we don't need all this. Okay. In the main.jsx we have app. In index.html we have our root. Okay. To render all this thing, let's change the name here. Filter data. Okay. Our application name will be the filter data. See, it's become filter data, and we're focusing here. Also not going to working with this. And inside the main.jsx everything is okay. Now our simple application is here. Let me show you to run with add some simple css like margin 0, padding 0, border box border size. Okay, that's it. And the font family Arial, and inside the main.js we are not required to update this. In this I'm going to import app.css. Export default function app
filter data. Oh, we didn't return anything. Return. Okay, filter data. Inside this, I would like to add this thing like margin 0, padding 0, box sizing border box, and in the body, filter data. We all are here. Body, like main.jsx for the styling. For main.jsx, our styling will be the index.css. Index.css. Okay. This is our app. Inside this index.html, alright. Then adding the body width of 100%, height of 100 VH, display flex, justify content center, align alt and center, and that's it. We all are here. And adding the background like to right 5 1 5 1
high school to what. This is our background and giving the color. Okay, this is our basic HTML and CSS for this, and now we are just focusing on to making this. First of all, we are going to making this. Whether we can make our application for bottom to up or up to bottom. We have two options. But now we are going first for this time we are going to making our application from bottom to top. Bottom to top. It's mean that for first time we are going to making this application for the bottom part, then we making for the top part. Okay. So for this, now first time is to the making the product row. For the product row, it has a component of two, like this product row. Every product having two components of table, like one for name and one for another data price. Okay, for this, like we can making through a table row for table heading of.
starting with this, and first I'm going to making this thing product row. A product row contains what? Two things. One is in the table row having two components, okay, same like this, like it have table row of table data of two, name and the product, okay. First but we are required to understand our architecture. We have category, prices and stock, okay. Category, prices and stock. Let's copy this once, okay. First is category. First component for the row table product row, components bottom to top, okay. Then first is table row, product row, product row, and product row contains what? Contain vegetable name and the price, name and the price, name and the price. For the name, names coming from category and the prices coming from the price, okay. Names coming from category and the prices coming from. But we are also have a condition like if the price, if the product is in the stock, अगर मेरा प्रोडक्ट स्टॉक में होगा तो उसको ब्लैक कलर से शो करना है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू शोइंग इट इन अ रेड color. So we have two conditions here as we are understanding there, like name of the product, product name, and the name is name, name of product. Then another is the price of the product, price of the product. Function product row, okay. And but as we know, we are required the product data from here, okay. And return single row, single element return करना है, and that contain table data like what. टेबल डेटा में क्या आएगा, उसका नेम आएगा जो अब अभी हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, नेम आएगा
देन वी विल डेटा फॉर व्हाट, प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, प्रोडक्ट का नेम एंड द प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर आ जाएगा एंड द प्रोडक्ट की प्राइस आएगी यहाँ पे। प्रोडक्ट डॉट नेम यहाँ आ जाएगा, देन यहाँ पे मेरा क्या कौन सा डेटा आएगा, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ओके, प्रोडक्ट डॉट नेम एंड द प्रोडक्ट डॉट प्राइस मेरा यहाँ पे आएगा, बट द सीन इज लाइक जो मेरा प्रोडक्ट का नेम है वो उसका कलर डिपेंड करेगा कि इट मे बी लाइक फॉर द रेड कलर और द ब्लैक कलर। हमें उसमें से कोई एक चूज करना है, लाइक वो उसका कलर स्टॉक में है या फिर नहीं है। जैसे स्टॉक ट्रू और फॉल्स देता है तो हम कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट स्टॉक। अगर मेरा प्रोडक्ट स्टॉक के अंदर आता है देन वी कंसीडर लाइक प्रोडक्ट डॉट नेम, उसके अंदर हम प्रोडक्ट का नेम डाल देंगे। अगर स्टॉक में नहीं आता है if it's not contains inside the product name, then we are creating CSS on it and then प्रोडक्ट का नेम तो वापस हम यहाँ से डालेंगे, बट उस नेम के साथ हम कुछ CSS साथ में लेके सेंड करेंगे, स्टाइलिंग कर देंगे स्टार्टिंग में ही। स्टाइलिंग में क्या होगा, क्या सीन है स्टाइलिंग का, उसमें क्या आएगा अपना, स्टाइलिंग में हम क्या करेंगे, जो कलर होगा ना उसको हम कर देंगे रेड। ओके, दैट्स इट। जो मेरा उसका कलर होगा उसको मैं रेड कर दूंगा और वो मेरा प्रोडक्ट वहां पे सेंड कर देंगे। फिर द सीन इज लाइक दिस। ओके, अब पता चल रहा है धीरे धीरे हम कंपोनेंट कैसे डिजाइन कर रहे हैं और उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं एक्चुअली। एंड ये मेरा यहाँ पर क्रिएट हो गया, क्या हमने यहाँ पर इसको सक्सेसफुली बना दिया प्रोडक्ट ग्रुप्स। अब हमें करना है प्रोडक्ट कैटेगरी को डिजाइन। ओके, बॉटम टू अप अप्रोच हम यूज कर रहे हैं ना, we're not using this, you see। ये अपना प्रोडक्ट के रो हो गए। हम प्रोडक्ट कैटेगरी बनाएंगे। अब प्रोडक्ट कैटेगरी में मेरा बस उसका प्रोडक्ट का कैटेगरी का नेम ही चाहिए, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट की कैटेगरी में बस उसका नेम चाहिए मुझे। सो मैं यहाँ पर फंक्शन नेक्स्ट कंपोनेंट क्या बनेगा मेरा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, जिसके अंदर मेरा एक सिंगल रो होगा जो हेडिंग होगा और उसके अंदर मेरा क्या जाएगा डेटा, उसका कैटेगरी जाएगा, उसके अंदर जाएगा प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी।
जो मेरा क्या लेके जाएगा, बस कैटेगरी लेके जाएगा। फंक्शन प्रोडक्ट कैटेगरी रो। प्रोडक्ट कैटेगरी रो में क्या लेके जाएगा मेरे को, कैटेगरी लेके जा रही है और क्या रिटर्न कर देगा मुझे, टेबल रो और टेबल रो में उस रो के अंदर मेरे को टेबल हेडिंग की प्रॉपर्टी चाहिए जिसके अंदर जो कितने स्पेस को कॉलम को कितने स्पेस कॉल स्पेस विल बी टू, देन उसके अंदर क्या फिल करेंगे हम, कैटेगरी को फिल कर आउट कर देंगे। सिंपल से मेरा कंपोनेंट बन गया। यस, कितना इजी हो रहा है बनाना। Now, as we see, we have completed our this one also। प्रोडक्ट कैटेगरी भी हमारा हो गया, हम कैटेगरी कैसे बना रहे हैं हमने अच्छे से देख लिया, एंड ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। देन अब मुझे चाहिए एक प्रोडक्ट टेबल। अब मुझे प्रोडक्ट टेबल बनाना है। अब बनाना है मुझे प्रोडक्ट टेबल। अब प्रोडक्ट टेबल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास है क्या क्या। हमारे पास एक मेन हेडिंग है,
Now in this product table we have first function product product table. We are going to get taking the access of product. In this product what we have, the architecture will be the table. In this what it will be going to return going to return a table. In this table uh, in this product table we having the product id of product heading of name and product heading of name and price. Okay, table heading for name and the price, heading table heading in the rows. First heading will be the name and second heading second heading will be the name and the price. Okay, name and the price, and then after the table heading we are we have table rows. Okay, in the after the table heading we are required table body. inside the table body Inside the table bodies we need inside the table, this is our table body, this is our table body. Okay, this is our table body. Okay, in the table body we having what rows, as we have just created the above product row that have product name and the price. But we are also required this in the table heading. We required let's see how we fetching all the rows. In this we require to making our logic first. Rows, how we fetch these rows?
we are going to fetching this rows from here. Const rows this let last category equals to none. Okay. Now I require product products. Fetching with all the products dot for each product like if product dot category is not equals to last category or called null is not equals to null. अगर वो null नहीं है not null then rows dot push rows के अंदर मैं क्या डालूंगा product but we find our component from here product category rows and we getting all the rows from here category rows creating our product category rows here category rows with the category as props we're sending props inside this category equals to product dot category and we also required to sending the key and my key will be the product dot category. Okay, this is the thing we are getting the data from here only हम यहीं से डेटा लेकर आ रहे हैं but we are getting the data like जो मेरे यहाँ पर प्रोडक्ट की की यहाँ पे ये बन रहा होगा ओके एंड सेकंड कैटेगरीज की जो की होगी वो ये वाली बनेगी ओके एंड दैट्स अ पॉइंट now after that after we get the keys from here and another category जो भी मेरा यहाँ से पुश होगा वो सारा मैं पुश कर दूंगा किसमें रोज में इस सारे रोज में मेरा डेटा मैं पुश कर दूंगा आफ्टर दैट आई रिक्वायर्ड टू पुश द प्रोडक्ट नाउ अब इस रो के अंदर मुझे प्रोडक्ट पुश करना है क्योंकि जो भी मैं यहाँ से हर रोज को मैं पुश कर रहा हूँ like row 1 row 2 row 3 row 4 then category then product अगर मेरा यहाँ पर डेटा एज वी सी लाइक सबसे पहले फ्रूट की कैटेगरी आ रही है देन मेरे पास वेजिटेबल की कैटेगरी आ रही है इसलिए हम यहाँ पर कोई भी वो नहीं लगाने वाले कंडीशन कि पहले सर्च करो फ्रूट्स के लिए देन वेजिटेबल्स के लिए ऐसा सीन नहीं है हमारा तो फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर क्या पुल करवाएंगे डायरेक्ट कैटेगरी का की एंड द की के बेसिस पर हम वहाँ पर डिवाइड कर देंगे ओके after this I'm going to push
दी। अगर मेरा नाउ रोज डॉट पुश प्रोडक्ट रो, लाइक अब मेरे हर प्रोडक्ट की रो में मेरे पास क्या था, एक नेम था उसका और उसकी प्राइसिंग थी। और जैसे मैंने कंपोनेंट यहाँ पे प्रोडक्ट रो का बना रखा पहले से, प्रोडक्ट का नेम एंड द प्राइस, और मैं यहाँ पे प्रॉप्स में मेरा प्रोडक्ट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रॉप्स में मैं अपना प्रोडक्ट सेंड करूंगा और उसके बेसिस वो फेच कर देगा कि अगर वो स्टॉक के अंदर है तो उसको लाइट कलर में देगा, अगर वो स्टॉक में नहीं है तो वो रेड कलर के अंदर स्पैन करके डाल रहा होगा। ओके, लेट्स सी। पुश क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की रो के अंदर, एंड मेरा प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे प्रॉप्स जा रहा है इसके लिए, उसके लिए मेरा प्रॉप्स क्या जाएगा, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट जाएगा, क्योंकि ये मेरा वो वाला प्रोडक्ट है जो मैं यहाँ से फेच करवा रहा हूँ। जो मेरा अब इस प्रोडक्ट टेबल को प्रॉप्स में कहीं और बनाऊंगा तब मैं इसको यहाँ पे डेटा आएगा, क्योंकि हम इस टाइम हम बॉटम टू टॉप अप्रोच यूज कर रहे हैं अपने सारे कंपोनेंट को बनाने के लिए। दैट्स वाई जो अपना लार्ज प्रोजेक्ट होता है जिसमें ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाते हैं तो उसमें हम टॉप टू बॉटम अप्रोच लेते हैं, ना कि हम बॉटम टॉप नो बॉटम टू टॉप अप्रोच इसमें ले रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है उसमें हम बॉटम टू टॉप जाते हैं, जो सिंपल प्रोजेक्ट होता है उसमें हम टॉप टू बॉटम लेके जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास क्या है कंपोनेंट्स है, तो उसको हैंडल करने के लिए इजीली हम यहाँ पर टॉप टू बॉटम अप्रोच ले रहे हैं। हमने अभी तक यहाँ पे प्रोडक्ट रो प्रोडक्ट कैटेगरी रो बन चुका है, हम प्रोडक्ट टेबल बना रहे हैं। ओके, प्रोडक्ट टेबल में मेरा पास मेरा प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट रो मेरा बन चुका है यहाँ पे। एंड हर बार जितने भी मैं यहाँ पर रेंडर करवाऊंगा, जितने भी रोज आएंगे हर रोज की मेरे पास एक की बनी जाएगी। तो मेरा इस प्रोडक्ट हर रो अब मेरा इस रो का मेन की क्या बनेगा, मेरा प्रोडक्ट का नेम बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर डॉलर जो प्राइसिंग है वो एक दो प्रोडक्ट का सेम हो सकता है बट नेम तो मेरा यूनिक ही होगा ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट का की बनेगा, की क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट डॉट नेम। ओके, आफ्टर दैट जब मैंने यहाँ पे सारा बन गया, इसका हो गया मेरे पास अब कंप्लीट। और जब मैंने यहाँ पर कर दिया कंप्लीट, आफ्टर दैट आफ्टर दिस अब मैं लेटेस्ट कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी डालूंगा। ओके, इस लेटेस्ट कैटेगरी अगर नल है, मतलब इस क्या था, अगर मेरा वहां पर नल आ रहा है मतलब कोई कैटेगरी वहां है ही नहीं, तो फिर मैं अंदर सर्च ही नहीं करूंगा। ओके, अगर मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट की एक कैटेगरी वहां पर फिट आ गई, ठीक है, अब मेरा न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ से बन गई, तो प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी मेरा क्या आ जाएगा, लेटेस्ट कैटेगरी इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। क्योंकि मैं कैटेगरी का नेम एक बार ही करने वाला हूँ, लाइक यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे फॉर ईच चलेगा, जब मेरा ये फॉर ईच लूप चलेगा देन, तो मैं ये स्क्रीनशॉट करके दिखाता हूँ। लाइक प्रोडक्ट रो मेरा एम्प्टी है अभी, और प्रोडक्ट का
कैटेगरी मेरा एम्प्टी है, क्योंकि मुझे एक ही कैटेगरी चाहिए। यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज नहीं है, वेदर इट कुड बी फ्रूट और वेदर इट कुड बी वेजिटेबल। अगर मेरा प्रोडक्ट की कैटेगरी भी नल होगी तब मैं इसमें प्रोडक्ट की कैटेगरी फिल कर दूंगा, अदरवाइज मैं बाकी डेटा को मैं फिल करने की कोशिश करूंगा। लाइक अभी मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट है, अब इसकी प्रोडक्ट की कैटेगरी मैंने इनिशियली यहाँ पे नल डाला। अगर मेरा प्रोडक्ट की कैटेगरी नल के इक्वल आ रही है, नल के इक्वल है, हाँ है, तो फिर वहां पे मैं प्रोडक्ट कैटेगरी से प्रोडक्ट को फेच करके वहां पे रो के अंदर रो के फर्स्ट रो वहां पे क्रिएट कर दूंगा। ओके, फर्स्ट रो मेरी प्रोडक्ट की कैटेगरी बन जाएगी। अब बाकी सारी जो रोज बनेगी उसमें मैं प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की कैटेगरी को मैं क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट की कैटेगरी का नेम से चेंज कर चुका हूँ। अब मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट की कैटेगरी का नेम यहाँ पर आ गई है। अब ये नल नहीं है, अब ये नल तो नहीं है। अब जब वापस से ये फॉर ईच चलेगा तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब नेक्स्ट टाइम हमेशा अभी मेरी प्रोडक्ट की डेटा ही जाएगा, वहां पे मेरा प्रोडक्ट का कैटेगरी नहीं जाएगा। समझ गए क्या अप्रोच था? ओके, नाउ इट्स टाइम टू फिल्टर डेटा। रोज मेरा यहाँ से सारा जितने भी रोज होंगे वो मुझे यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पर डेटा आता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर रिटर्न करता जाएगा। ओके, अब मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल भी बन के तैयार हो। अब मुझे बनाना है सर्च बार। अब सर्च बार के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, इसके अंदर मेरे पास दो चीज़ है, एक सर्च एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और मुझे एक चैट बॉक्स चाहिए और एक कुछ टेक्स्ट चाहिए। मुझे एक कंपोनेंट बनाना है क्या, सर्च बार। अभी सर्च बार मेरे से क्या क्या ले रहा है, एक तो लेगा मेरे से टेक्स्ट बॉक्स और दूसरा क्या लेगा मेरे से, एक टेक्स्ट बॉक्स लेगा और दूसरा मेरे से क्या लेगा, ये टेक्स्ट बॉक्स। फंक्शन सर्च बार। Inside this search bar, Hi.
Inside this search bar, what it will be the return. Going to return the form. Input text, placeholder search. Then we have label, input box have a checkbox, no ID, we need a space, little space. For this space, after this small space, what I'm going to do, only show product in stock. That's it. In the search bar, this will be the answer. So you can see we just created this search bar, need a checkbox, then title, then some space. That's it. And this is a form. Form, this is table, all this thing, that's it. ये भी हो गया. Now it's time to building a last component for filterable product table. In the last component, I want two main component. One is search bar and another one is product table. One is search bar and another one is product table. Search bar and function filter data
like I'm going to return. Going to return what? Search bar. And my product table needs products. That's it. Amazing, you did. You have created this. Now, creating our app. Now we have just cleared this also. Now this is my app. This is my what? App. Well, this is my app, so we are going to execute. Export default function app app products return returning just return. We're not required to send anything else. And with what with product equals to products. Let me make this down. It's not compulsory, but still. But I want to hear you. There's no need to make it up. So we just created our application with two reasons. Oh, we have access to this.
Here product name is always rendered and conditional format using name variable is not used. Product.name with name. If this code looks intimidating, go through the quick start first. After building your component, you have a library for usable component. Render your data model because this is a static app. The component will only return JSX, the component at the top of the hierarchy. This will take at the top of the hierarchy. This will take your data model and as a props. This is called one-way data flow because the data flows down from top level component that to ones at the bottom of the tree. At this point, you should not be using any state value. That's for the next step. Find the minimal but complete representation of UI state. I'm going to start this after 20 minutes of break, so I will get back to you after 20 minutes.